मोहतरमुल मुक़ाम काबिल एहतराम मेरे तमाम असातिज़ा इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की जानिब से एक सर्कुलर हमें आया हुआ है, जिसमें विद्यांजलि 2.0 के ताल्लुक़ से हमें बताया गया है। इसके ताल्लुक़ से हम अपनी स्कूलों में एक बैनर या बोर्ड बनवाकर लगाना है, जिसके ज़रिए से हम अपनी स्कूलों के बच्चों की तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर आर्डर में दिखाया गया है हमें ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಬಂಧ 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು मुद्रिसलु ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು। तो हज़रात, यहाँ पर इस तरह का एक आर्डर है। इसके तहत हमें अपने स्कूलों में किस तरह से बैनर बनवाना है और उस बैनर में हमको किन चीज़ों को वहाँ पर दर्ज करना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हज़रात आइए, तो यहाँ पर ये हमारा इस विद्यांजलि का बैनर होगा। तो यहाँ पर 2 ಕಾಲಮ್ होंगे, एक ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ ಎಂದರೇನು और एक जो है ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ स्वयं सेवकರು। तो यहाँ पर विद्यांजलि अंदरेनु, तो यहाँ पर इसके नीचे ये मैटर इंशाल्लाह आएगा, जिसमें ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸದುಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ವೇದಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಾಂಜಲಿ 2.0 पोर्टल। और यहाँ पर बाजू में ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, यानी इसके नीचे ये मैटर रहेगा। ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, CSR ಗುಂಪು, NGOಗಳು https://vidyanjali.education.government.in विद्यांजलि 2.0 पोर्टल नोंदाಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। तो इस तरह का पूरा मैटर हमको हमारे बैनर में लिखकर क्या है स्कूल के सामने या हमारे स्कूल के क्या है ग्राउंड में इसको हम लगा सकते हैं, जिससे क्या है पब्लिक इसको देखकर क्या है इसका इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो और एक बात यहाँ पर हज़रात, ये जो बैनर है, इस बैनर के ऊपर में आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हैं और नीचे जो है अपने स्कूल के HM का मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक हम बैनर बनवा कर क्या है विद्यांजलि के ताल्लुक़ से हम अपने स्कूलों के सामने इसको लगवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।